Now here, suppose I introduce the word energy of SHM. So Hmm. the energy of SHM is entirely mechanical energy. Fine. Energy of SHM is entirely mechanical energy. And Hmm. this mechanical energy is of two types. One is kinetic energy Hmm. and one is potential energy. Right. So the total energy of SHM is kinetic energy plus potential. So I can say that the Hmm. kinetic energy is given by half mv square. Hmm. So kinetic energy of SHM can be written as Hmm. half m velocity के प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर Hmm. याद है as a function of x. So Yes. kinetic energy I get as half m omega square a square minus x square as Right. a function of x. Hmm. Or I can, as a function of time, I can write this as half m. This is a omega cos omega t plus phi. Hmm. Right. So kinetic energy comes out to be half m a square omega or half m omega square a square cos square omega t plus phi. Hmm. This is the kinetic energy. Can. So Hmm. time ka. So Hmm. this graph x versus kinetic energy graph Hmm. and here time versus kinetic energy graph कैसा लग होगा गुराशिश ये बताइए. y is equal to c into d minus x square है यहाँ पे. y का Hmm. पावर 1 x का पावर, so this is parabola. Hmm. This is parabola. Hmm. यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है. Hmm. This is डाउनवर्ड ओपन पैराबोला. यदि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता तो अपवर्ड ओपन पैराबोला. Hmm. So this is a parabola और वो भी डाउनवर्ड ओपन पैराबोला इस तरह से. This is a, this is minus a, and this is the maximum, that is half m omega square a square. Hmm. Right. ठीक है. एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम है गुराशीष, दिस Hmm. इज cos स्क्वायर का ग्राफ होगा. cos स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है. cos कैन बी प्लस और माइनस, बट यदि प्लस या माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा. कर देंगे एंड दिस इज half m omega square a square. Hmm. Now let's talk about potential energy. So Hmm. potential energy is, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे? आप बता सकते हैं अपना दिमाग यूज करके कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी? क्या इक्वेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का? यदि आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में वापस जाएंगे तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. हाँ. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर. Okay. हाँ हाँ हाँ. तो F डॉट डी आर इज माइनस डी यू. फोर्स यहाँ पे जो होगा, यदि से डी एक्स कहते हैं तो फोर्स Hmm. के एक्स डी एक्स होगा और इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे होंगे. Hmm. तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. Hmm. Potential energy, so I can say that potential energy Hmm. is either half k की जगह पे मैं m omega square लिख सकता हूँ because k by m was omega square Hmm. into x square. So this is potential energy. और potential energy को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ हाफ k की जगह पे m omega square और Hmm. x की जगह पे a sin omega t whole square कर सकता हूँ, a sin omega t plus phi whole square कर सकता हूँ. So हाँ. potential Right. energy will come out to be half m omega square a square sin square omega t plus phi. Now let's come to total energy. Hmm. So total energy is sum of kinetic energy and potential energy. Hmm. So I can say kinetic energy is half m omega square a square minus x square and potential energy is half m omega square x square. Hmm. So if you add this,
you will realize that x square gets cancelled out, and we will are left with half m omega square a square. So total Right. energy is constant. It will neither Right. change its position. तो यदि आपको मैं पूछूंगा कि x वर्सेस टोटल एनर्जी ग्राफ या टाइम वर्सेस टोटल एनर्जी ग्राफ कैसा होगा, Straight तो line. स्ट्रेट लाइन